morning, everyone. Namaste. Bhamini this side. So I welcome you all on behalf of Always Live Yoga. I hope everyone is doing well. So you can switch on your cameras if you wish to. आप cameras on कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो it's okay. You can keep them off also. अगर नहीं मन है on करने का तो off रख के you can simply listen. Okay, I'll request you all to just keep 2 cushions with you. 2 cushions अपने पास रखिए because I'll be showing some yoga therapy as well. So for that we will be requiring some cushions. Okay, so we'll be talking about the perimenopause syndrome. So basically आपने menopause के बारे में, अच्छा हिंदी में बात करूँ या इंग्लिश में, या हिंदी इंग्लिश, ज्यादा हिंदी यूज करूँ? Thumbs up everyone. ठीक है, तो Yes, मैं ma'am. हिंदी यूज करूंगी. ठीक है, ओके Yes. मनस्विनी जी. माइक्स ऑफ एवरीवन. ठीक है, हिंदी ज्यादा यूज करूंगी, बीच बीच में इंग्लिश भी बोलती रहूंगी ताकि अगर किसी को हिंदी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो दे विल अंडरस्टैंड. तो हमने मेनोपॉज के बारे में सुना ही है, दैट व्हाट इज मेनोपॉज. मेनोपॉज क्या होता है, वी ऑल नो इट. तो बेसिकली एट द एज ऑफ 45 से 50 के बीच में यूजुअली लेडीज को मेनोपॉज लगता है, एंड दैट इज द एज वहां पे. और उससे पहले का जो स्टेज है जिसका हम आज बात करने वाले हैं, दैट इज पेरीमेनोपॉज सिंड्रोम. तो बेसिकली पेरीमेनोपॉज सिंड्रोम होता है ऑलमोस्ट अराउंड मेनोपॉज. हम एग्जैक्ट मेनोपॉज की नहीं बात कर रहे हैं. तो मेनोपॉज से पहले जो परेशानियां आनी शुरू होती है बॉडी में, अराउंड मेनोपॉज वाला जो पीरियड होता है, जिस समय सारी प्रॉब्लम्स, इरेगुलर पीरियड, मूड स्विंग्स, मूड चेंजेस, हॉट फ्लैशेस, इरेगुलर स्लीप, तो ये सारी परेशानियां जो होती है, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स. रेडी जी, डोंट वरी, आई विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश एज वेल. ओके, so these are the problems which we are facing around menopause, that is the perimenopause syndrome. So let's talk about perimenopause syndrome. So basically around menopause, when the body is preparing itself naturally to end its reproductive years. जब हमारा शरीर नेचुरल वे में अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है रिप्रोडक्टिव, जो हमारा रिप्रोडक्शन चल रहा है या रिप्रोडक्टिव ईयर्स रहते हैं, उसको बिल्कुल एंड करने के लिए. ओके, so the main hormone which is estrogen के बारे में हम सब ने सुना होगा. this is the main hormone of the female body. okay, हमारा females का सबसे मेन हार्मोन होता है. मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन होता है. ओके, सो ईस्ट्रोजन जब ये अराउंड मेनोपॉज में जो भी प्रॉब्लम्स हम झेलते हैं, तो क्या होता है इस ईस्ट्रोजन की वजह से, क्योंकि ये रैपिडली रेज करता है, गिरता है, रेज करता है, गिरता है. तो इसी वजह से सारे जो आप सिम्टम्स फेस करते हैं वो इस वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस मेन hormone estrogen. Okay, so what is happening, estrogen is again raising high, falling, raising high, falling at the time of perimenopause. But at the time of exact menopause, what will happen, it will completely drop. जो ईस्ट्रोजन लेवल है वो मेनोपॉज के टाइम पे बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाएगा, बिल्कुल डिक्लाइन हो जाएगा. बट पेरीमेनोपॉज के टाइम पे रेस ड्रॉप, raise and drop. So उस वजह से we are facing the fluctuations in the mood and everything. So this is the main thing, estrogen. Okay, now let's talk about, once you go through the 12 months without menstrual, without periods, जब 12 महीने हम पूरे कंप्लीट कर लेते हैं बिना पीरियड्स के, दैट इज द एग्जैक्ट मेनोपॉज, कि जब हमें मेनोपॉज लग चुका है एंड नाउ वी विल नॉट एक्सपेक्ट एनी पीरियड्स टू कम फर्दर. अगर 6 महीने में आ रहे हैं, 3 महीने में आ रहे हैं, 2 महीने में आ रहे हैं, दैट इज नॉट एग्जैक्ट मेनोपॉज, दैट इज अगेन अ पेरीमेनोपॉज जो चल रहा है. ओके, बट देन after completing complete 12 months, we can expect कि okay, now no more periods will be coming and we have reached the menopause um, uh, stage. Okay, so let's talk about symptoms. The most common symptoms, irregular sleep. सबसे पहला चीज जो आप पेरीमेनोपॉज के टाइम पे देखेंगे, इरेगुलर स्लीप रहेगा. स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने लग जाएंगे, इंसोम्निया भी हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप जिसको हम कहते हैं. और उस वजह से बिकॉज ऑफ इरेगुलर स्लीप, अगेन द मोस्ट कॉमन नेक्स्ट सिम्टम इज मूड चेंजेस, मूड फ्लक्चुएशंस. क्योंकि अगर स्लीप अच्छी नहीं हो रही है, इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न्स चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या अफेक्ट करेगा, किस पे अफेक्ट करेगा, हमारे मूड पर. तो मूड उस वजह से डिस्टर्ब रहता है. मूड का ईस्ट्रोजन और हार्मोन से कोई लेना देना नहीं होता है.
बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप हमारा मूड डिस्टर्ब रहता है, मूड में चेंजेस रहेंगे, बहुत ज्यादा बेचैनी रहेगी, परेशानी रहेगी, सडनली वील गेट एजिटेटेड, suddenly we'll get emotional because of lack of sleeping issues. Okay. Okay, the third symptom is vaginal dryness. So mostly ladies face this issue of vaginal dryness, and because of that vaginal dryness, again we will be inviting more of bladder related issues, more of vaginal related problems. तो उस टाइम पे जब vaginal dryness होना शुरू होता है, हम फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि dryness किस वजह से हो रहा है, but that is again a perimenopause syndrome only. vaginal dryness की वजह से बहुत ज्यादा ब्लैडर में भी प्रॉब्लम आ सकता है, अगेन यूटीआईज के इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, एंड देन वजाइनल ड्राइनेस की वजह से इरिटेशन, अगेन अ नेक्स्ट सिम्टम, वेरी वेरी इरिटेटेड, इरिटेशन रहेगा, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब रहेगा, वजाइनल ड्राइनेस. ओके, सो दीज आर द सिम्टम्स, यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट. हॉट फ्लैशेस ड्यूरिंग नाइट, जब आप सो रहे हैं तो हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, पसीने आना अचानक से, आउट ऑफ नो वेयर वी आर स्वेटिंग अ लॉट, पसीना आना वेरी वेरी कॉमन. तो इसका ये नहीं है, हम इसको कोई कोई लोग जो नहीं समझ पा रहे होते हैं पेरीमेनोपॉज सिंड्रोम का स्टेज, तो वो इस चीज को रिलेट कर लेते हैं कि बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, बीपी डिस्टर्ब हो रहा है, मे बी बीपी शूट हो रहा है. दैट्स नॉट द थिंग, क्योंकि अगर हमें बीपी नहीं है तो बीपी के इश्यूज नहीं रहते हैं. दैट हॉट फ्लैशेस आर बिकॉज ऑफ अगेन द पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम ओनली, कि रात में अचानक से आउट ऑफ नो वेयर वी आर स्वेटिंग अ लॉट, एंड उसकी वजह से भी हमारा नींद डिस्टर्ब होता है, नींद फ्लक्चुएट होना शुरू होता है. ओके, एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी हैव टू रिमेम्बर, मेनोपॉज को बहुत हल्के में नहीं लेना है. सी मेनी पीपल विल फेस नो सिम्टम्स, okay, and many people will face every symptom, and many people will face okay 2 symptoms or just 1 or 3. तो जरूरी नहीं है सबके लिए ये सेम हो, किसी के लिए सिर्फ एक सिम्टम, किसी के लिए सारे सिम्टम्स, और किसी को कोई भी सिम्टम नहीं होगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड ओनली, हमें हमारे बॉडी के थ्रू ही समझ में आएगा. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज लॉस ऑफ बोन, वो बहुत ज्यादा आगे जाके होता है. So loss of bone and the chances of at the risk of osteoporosis increases. Osteoporosis के chances भी ज्यादा बढ़ जाते हैं. Loss of bone because again lack of estrogen. Estrogen जब बॉडी में डिक्लाइन होना शुरू होता है तो osteoporosis के chances हाई हो जाते हैं, लॉस ऑफ बोन के चांसेस हाई हो जाते हैं. ओके, so we have to remember this. And again changes in the cholesterol levels. कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में बहुत मेजर चेंजेस आ सकते हैं ड्यूरिंग दिस मेनोपॉजल टाइम. तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके हाई जाएंगे, जिस वजह से हमारे हार्ट रिलेटेड इश्यूज के भी चांसेस रह सकते हैं, बट दीज आर द, मतलब ये लास्ट में ही लेकर चलना है, यूजुअली ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती नहीं है. वेरी रेयर द लेडीज विच आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम प्रॉपरली, नॉट फिजिकल एक्सरसाइज एट ऑल, नॉट मेडिटेटिंग, नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट स्ट्रेस लेवल्स, तो उनको ये चांसेस ज्यादा रहते हैं. तो बोन, again because of that osteoporosis thing, vitamin D very very important. I hope you all take sunlight because sunlight can cure everything. ठीक है, तो sunlight हमें अच्छे से लेनी है. एक पर्टिकुलर एज में जाने के बाद अभी से लेना शुरू करेंगे तो फिर उस टाइम पे osteoporosis जैसे चांसेस नहीं डेवलप होंगे. The ladies which are not taking sunlight at all, वो नियर 40s और 45 में osteoporosis का शिकार होने के उनके 100% चांसेस रहते हैं. Not everyone. Okay, so we will make sure of this. एंड देन सेकेंड थिंग, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, जो स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं. सी द पीपल, हम ऑलवेज लाइव योगा में योगा करवाते हैं. सो वी आर नॉट जस्ट डूइंग योगा जस्ट फॉर वेट लॉस और फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेमिना. हम क्यों कर रहे हैं, ताकि नियर फ्यूचर व्हेन वी रीच दैट मेनोपॉज स्टेज या ये सारी प्रॉब्लम्स हमें ना झेलनी पड़े, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हमारे डिस्टर्ब ना हो, हमारा स्ट्रेस लेवल हमारे कंट्रोल में रहे. So because of this, we all are practicing yoga. Okay, so the ladies who are not taking care of their stress levels, who are not managing their stress, फिर अगेन उनको ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में इश्यू आएगा मेनोपॉज के टाइम. ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, फिजिकल एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so now just give me a second. ओके, सो व्हेन टू सी अ डॉक्टर, हमें डॉक्टर की आवश्यकता कब पड़ सकती है. हमें ये सारी चीजें तो समझ में आ गई कि अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इफ वी आर इन आवर नियर 40s और 45, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पेरीमेनोपॉज सिंड्रोम हमारा चल रहा है. ओके, बट व्हेन टू सी अ डॉक्टर, डॉक्टर की जरूरत कब पड़ सकती है. सो व्हेन द ब्लीडिंग इज वेरी वेरी हैवी, जब ब्लीडिंग
बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है, आपको हर 1-2 घंटे में टैम्पॉन या पैड चेंज करना पड़ रहा है, दैट मीन्स वी रियली नीड टू सी अ डॉक्टर, समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन, जो हम सेल्फ डायग्नोसिस या सेल्फ ट्रीटमेंट पर नहीं छोड़ सकते हैं, डॉक्टर की जरूरत वहां पे लगेगी। ओके, देन ब्लीडिंग गोइंग फॉर मोर देन 7 डेज, 7 दिन से ऊपर भी अगर ब्लीडिंग चलता ही जा रहा है हमारा, तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। ठीक है, देन ब्लीडिंग अकर्स बिटवीन पीरियड्स, पीरियड्स चल रहे हैं उसके बीच बीच में भी, पीरियड जस्ट खत्म हुआ है उसके बाद भी हम फेस कर रहे हैं, पीरियड आने से पहले भी हम फेस कर रहे हैं, और लगातार पूरा महीना ही ऐसे ही जा रहा है, स्पॉटिंग आ रहा है, बार बार स्पॉटिंग आ रहा है, तो भी अगेन वी हैव टू सी अ डॉक्टर। एंड देन पीरियड अकरिंग लेस देन 21 डेज, हमारा साइकिल जो 28 डेज का रहता है, वो 21 डेज से अंदर चल रहा है, सिर्फ 21 डेज के अंदर अंदर ही अगेन एंड अगेन वी आर गेटिंग पीरियड, वी हैव टू सी अ डॉक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। नाउ नेक्स्ट थिंग, वी आर जंपिंग ऑन टू द थेरेपी फॉर दिस इश्यूज। तो whenever you are facing this पेरीमेनोपॉज सिंड्रोम अराउंड मेनोपॉज, जब हम मेनोपॉज पे नहीं हिट कर रहे हैं और उसके पहले का ड्यूरेशन है, ये सारे आसन अगर हम तब से करने लग जाएंगे तो मेनोपॉज के टाइम तक हमें इतनी ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। एंड अगेन व्हेन आई टॉक अबाउट थेरेपी, थेरेपी मीन्स होल्डिंग ऑफ द आसनास, वी आर नॉट डूइंग दी आसना जैसे हम रेगुलर क्लासेस में करते हैं कि वी आर डूइंग अ विन्यासा फ्लो और अष्टांगा फ्लो। Therapy means we are holding the asanas for 1 minute, 2 minutes, 2.5 minutes, 3 minutes as per our capacity. Okay, very simple poses, but then therapy occurs when we are holding the asana. So first asana which will help us, so the butterfly pose. Okay, very very important pose. Why I'm using cushion? So that we can maintain this asana for 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, because we are getting a support, our pelvic region is getting a good support, my knees are getting a good support, so I will not get tired while sitting in this asana and maintaining this asana for long. For more thing, what we can do, under the buttock also you can use one cushion or a block if you have, अगर block है, cushion है, तो buttocks के नीचे भी use करेंगे। और इस तरह से दोनों cushions को रखते हुए जब भी, मतलब मैं यही कहूंगी कि हम जब पेरीमेनोपॉज की स्टेज में हैं, हम जब हमें टाइम मिल रहा है तब हम ऐसे बैठें। whenever we are getting time we can sit like this, make sure मील के तुरंत बाद नहीं, just after having heavy meal we are not sitting, in the morning for at least 7 to 8 minutes, in the evening for at least 7 to 8 minutes. Okay, so natural healing है। पर अगर हम cushions use नहीं करते, for example if you're not using the cushions, again after 2 to 3 minutes our legs will start hurting, our back will start hurting, because we are not yoga practitioners, we cannot hold this pose long for more than 3 minutes. If you wish you can try, 3 मिनट में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने लग जाएगा, इधर उधर दर्द चालू हो जाएगा, so for that we are using support. Okay, so one first asana, second is again Vajrasan. We all know about Vajrasan. If our knees and ankles are healthy, we will sit without any support. But if the knees and ankles are not healthy, for them, what you will do, जिनके नीज और एंकल्स हेल्दी नहीं है, परेशानी देते हैं, वो भी बैठ सकते हैं। कैसे बैठेंगे, एक कुशन को नीचे लगाएंगे, ओके, दूसरे कुशन को यहाँ लगाएंगे, सपोर्ट मिल गया, अब नीज पर प्रेशर नहीं आएगा, आपके एंकल्स पर भी प्रेशर नहीं आएगा। तो फॉर देम, those who have knee issues, ankle issues, but still want to sit in Vajrasan for 5 to 10 minutes, they will do this. Cushion under the ankles and cushion above the ankles. Okay? Understood? And then you can maintain this pose for 5 to 7 minutes, or as per your capacity 10 minutes or more than that. So this is the second pose which is very very effective during your perimenopause syndrome. Third, Paschimottanasana. Okay, so we will make sure we are not doing this, no hunching, आगे जाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हमें make sure करना है पैरों को खींचना है, पंजे खींचे हुए रहेंगे। Okay, inhale, we will extend our spine, exhale, we will go down, stretch and then maintain. Okay, but if we are not able to do this much, we will maintain here. But now for how long we can maintain this, again those who cannot maintain for long will use cushions, okay, and then simply stay like this, so that we are not compromising with the spine. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है क्या होता है, हम स्पाइन के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं,
तो होल्डिंग जितनी ज्यादा रहेगी ठीक पोस्चर में उतना इफेक्टिव रहेगा पोज। तो इस तरह से कुशंस करते हुए स्पाइन को एक्सटेंड करते हुए मेंटेन करना है। ओके, and then we can simply rest also for a few minutes, and again then we will maintain the pose for at least 3 minutes. Okay, so this is the third pose. Fourth, downward facing dog. Okay, adho mukho shvanasana. So for the people who cannot touch their heels on ground, will not raise the heels up like this. What you will do is you will micro bend the knee, okay, and then you will maintain here. Ideal posture, but if your heels are raising up, micro bend the knees. This is not correct. You will not do this, okay, and maintain here for again at least 3 minutes if you can. Okay, deep breathing, deep breaths, long and deep breaths. So the fourth pose is Janu Shirshasana. We will sit like this and we will spread our legs. We will keep the left heel near our perineum. It will help you in your insomnia. इंसोमिया में बहुत हेल्प करेगा, नींद नहीं आती है, बीपी प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्प करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्प करेगा. ओके, so arms up, twisting and then bending forward. Okay, we will hold here again for 10 to 12 long deep breaths. We will come back. We will do it from the other side. 10 to 12 long deep breaths. This is the variation. Simple Janu Shirasana. ये वाला है. Okay. This is simple one. You can do this or that. Up to you. You can simply keep your leg like this or like this. Up to you. And then lying down. We all do this pose most of the time. We'll keep a little bit of gap between the knees and the feet. पंजे और घुटनों में hips जितना दूरी रहेगा, and then raising the hips up. Okay, and again for maintaining it for long, we can use our hand support. So make sure we have to maintain each and every pose for longer duration. So if we will not use hand support, what will happen? We will get tired after 30 seconds. Okay, but if we have to maintain it for 1 minute, we will use our hand support. Okay, but then we will not compromise with the pose. For using this hand support, we will lift up more and more, and we will maintain nicely. Longer and deeper breaths. We will maintain at least for 60 seconds. Slowly come back. Relax in Pavan Mukht. And then be seated. Okay? I hope the people who are going through this phase are writing down the asana's name. It will really help you. Okay, in pranayams, again to balance your sleep, Brahmari, to balance your cholesterol levels, Brahmari, it will be very, very helpful. So, जो Brahmari हम करते, applying Shanmukhi Mudra, our index fingers on our head, our two fingers on our eyes, and the little finger on the nose. And then closing the ears, inhale, and while exhaling, we will make a humming bee sound. We will do it at least 10 times, morning, evening, 10 times. Waking up and before sleep. Waking up before sleep. Do Brahmari, okay? And the last thing is Anulom Vilom. Very, very important to purify the nadis. हमारी नाड़ी के purification में बहुत help करेगा. Second thing, हमारा जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है, the three main nadis. ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना. इन तीनों नाड़ीज को बैलेंस में रखने के लिए अनुलोम विलोम, जिसको हम नाड़ी शोधन भी कहते हैं, तो नाड़ी शोधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने करना ही है. 12 times at least we are doing morning and evening again. बिल्कुल आलस नहीं करना है प्राणायाम के टाइम पे, क्योंकि प्राणायाम हार्मोनल बैलेंस में जल्दी काम करते हैं एज कंपेयर टू आसनास. तो प्राणायाम को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, पहले भी कर सकते हैं, और आफ्टर डूइंग दीज आसनास, ये सेट किए आसन के, और उसके बाद हम शांति से बैठ के आधा घंटा लगा के सिर्फ भ्रामरी और अनुलोम विलोम कर रहे हैं. वी आर यूजिंग आवर कंप्लीट हाफ एन आवर and then doing Brahmari and Anulom Vilom, both. Okay? Okay, so now up to you. Any questions, any queries? जो भी पूछना है, कोई doubts हैं तो please feel free to ask. कुछ repeat करना है तो मैं repeat करूंगी फिर से. Ma'am, do repeat the name of asanas. Yes. Please note down. The first asana we have to do is the
Butterfly pose, Vajrasan. So the butterfly pose, okay. Second one is Vajrasan. Third, Paschimottanasana. You all can just note it down. आपको आगे भी हेल्प करेगा या आपकी फैमिली में भी कोई है जो इस फेज से जा रहा है, you can guide them as well. Fourth is downward facing dog, Adho Mukho Shvanasana और Parvatasana. Ma'am, which one was the third one? Paschimottanasana, Paschim Uttan Asana. Ma'am, can you PAS. show me Paschimottanasana? This one. This one. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Yeah. Right, Paschimottanasana. After Paschimottanasana, Parvatasana. After Parvatasana, Setu Bandha Asana, the bridge pose. And after Setu Bandha Asana, Janu Sheesh Asana. Again, I'm repeating, Baddha Kon, butterfly, Vajrasan, Paschim Uttanasana, Parvatasana, Setu Bandha Asana, and Janu Sheesh Asana. The 6 poses very, very important, and they are working as a therapy during our perimenopause syndrome and at the time of menopause as well. आप अभी से अगर इन आसन को रेगुलर बेसिस पे होल्डिंग के साथ करना शुरू करते हैं तो आई कैन गारंटी यू आपको मेनोपॉज के टाइम पे ज्यादा परेशानियां, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी. यूजुअली जो लेडीज बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करती हैं, आप उनको भी देखिएगा और आप वर्कआउट करते हैं, आप अपने आप को भी देखिएगा, यू विल सी द चेंजेस. That how agitated they are and how their mood fluctuations will affect whole family. But जब हम अगर योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, definitely we will be able to balance our emotions, we will be able to balance our stress. Very, very important. And with these help of these asanas and pranayam, you will remain calm and composed during your menopausal stage. Okay. Yes. Any other questions? Please feel free to ask. मैम जानु शीर्षासन कैसे करना है? सॉरी, जानु शीर्षासन ऐसे करना है, अपनी हील को पेरिनियम के यहाँ पे प्रेस करके रखना है. ठीक है, हमारी हील इस तरह से प्रेस होके रहेगी, पैर सीधा रहेगा, इधर उधर टेढ़ा नहीं जाएगा. एंड देन exhale, bend forward, hold 10 long deep breaths, come back, do it from the other side, 10 long deep breaths. Okay. Yes. Next question. Ma'am, Paschimottanasana, I have a lot of belly fat, ma'am. I just joined 3 days ago. Yesterday I missed your class. I wanted to join at 4:30. Unfortunately, I missed it. I was very desperate to join your class. So I have tummy starting from my breast, ma'am, like huge tummy. Very difficult for me to bend. I don't know how to do that. Like not able to bend. Only 30% I'm able to bend. What to do, ma'am? Yes. Don't worry. For that only I have showed this support. Okay. So for people who cannot bend forward, who are obese or who have that tummy fat or extra breast, okay, for them only, what we will do is we will use this cushions so that we are not compromising with the posture. The tummy won't come when you will press the cushions against your tummy. No, your tummy will naturally go in, your spine will extend, and these cushions will work as a good support, good barrier. Okay. And now then maintain up till here only. That's it. It will give you the same effect. The effect this is giving you, it will also give you the same effect. Make sure you are maintaining our toes are flexed nicely, and then we are maintaining here for long, at least for 2 minutes. So your tummy won't come when you will be using the cushions or blocks. Okay. Make sure you order that bolster. If you can order that bolster, and then press the bolster against your tummy, and then try to do Paschimottanasana. Okay. Ma'am, will it reduce the tummy fat also? No. This Paschimottanasana will not reduce tummy fat. For reducing the tummy fat, you have to do sun salutations. You have to do Chakri Sanchalan, but this is not the concern right now. We are talking about the perimenopause syndrome, so I won't be talking about the different asanas. We can talk about the tummy fat later in our later classes. Okay, Anuradha ji? Okay. Yes. Next question.
मैम मेरे 2 साल से पीरियड्स नहीं आए, लाइक बोल सकते हैं कि मोनोपोज पीरियड्स, लाइक, और एज माई इज 38। तो मुझे क्या केयर करनी पड़ेगी, लाइक डॉक्टर को दिखाना फिर या फिर कोई मेडिसिन लेने का? योगा तो मैं करती ही हूँ रेगुलर आपका। ठीक है। 2 साल से आपको कोई पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं आए हैं, नो, स्पॉटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है? नो, नथिंग, नथिंग। तो ठीक है, वो मेनोपॉज लग गया है आपको, मेनोपॉज नेचुरल वे में लग चुका है। हम 12 महीने का वेट करते हैं यूजुअली। अगर 12 महीने तक कोई भी पीरियड हमें नहीं आता है या स्पॉटिंग नहीं होती है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मेनोपॉज हो चुका है। और आपको 2 साल ओके, से नहीं आए, तो आप मेनोपॉज हिट कर चुके हैं। अब कोई भी एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत नहीं है, यू हैव ऑलरेडी रीच्ड दैट लेवल। अब इसके बाद ये करना है कि डाइट पर फोकस करना है। डाइट का अच्छे से ध्यान रखिए, लाइट खाइए, ठीक है, और अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल में रखिए। दैट्स इट, एंड कीप डूइंग योगा, दैट्स इट। क्योंकि अब ओके हार्मोन फाइन। फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे, और आपका जो ईस्ट्रोजन लेवल है बार बार अप एंड डाउन नहीं होगा। ओके, सो यू डोंट हैव टू ओके वरी। फाइन। ओके फाइन। Yeah, hello, ma'am. यस ग्रीष्मा। Hi, ma'am. I'm Grishma. Actually, ma'am, I'm age of 34. Before, for 3 months, I didn't got any period. Okay. After that, I don't know, for every 18 days, I'm getting period now. First 3 months I यस। didn't got any period. Now हम्म। after that, now for every 18 days I am getting period, and also the same what you said, sleep issue, and just I have 5 years of kid. I'm getting irritated. I don't know. I may beat her like that, but I don't beat. But I'm feeling like that, irritated like that. You said no mood swing, and sleep, lack of sleep. I'm suffering with that also, and without any reason I want to cry a lot. Yeah, For yeah, small I can reasons, understand. yeah. This is all because of your estrogen level again and again raising up Hmm. and going down. Don't Yeah. worry. Just meditate if you can. Just do Omkar chanting if you can. Just Yeah. start with your Omkar chantings, okay? Meditation will help you right now. Rather than asanas, go for meditation for now. Sit in the Uh, morning, do 10 to 12 Omkars every morning, and at the night, do this Brahmari pranayam, okay, before sleeping. And okay. if you feel like crying again and again, it's okay. Let the emotions come out. You don't have to suppress them. You don't just have to Okay. suppress your emotions. Let them come out. Whenever you feel like crying, cry, but then don't get angry on your kids or on your family. Okay, it's okay. Yeah, Cry and yeah. let it. Okay, it will be Okay. better. And Yeah, ma'am. then because your sleeping pattern will improve, because when you will be doing this Brahmari, okay, your stress levels will go down when you will do Omkar chantings. Okay, and then Okay. with the asanas I told you, start performing those asanas every day. You will see a change in yourself. Okay, Okay. don't worry, it will be okay. But just give yourself few days or few months. Okay, ma'am. Actually, I'm attending this regular online. Is there any special timing for this only so that I can shift on that yoga class? Uh, Regular yoga class I have joined for 1 year. Instead of that, because I can't spend 2 times for yoga. So that instead of that, I'll join in this yoga. Okay, I will talk to the team regarding this, that they may, add one extra batch for this menopause issue only. If they will Mm. do that, well, we will let you know and you can join that batch. But if you are doing these regular asanas also, because we make Mm. these asanas do in every regular class, Vajrasan, butterfly pose, Mm. Paschimottanasana, we are doing. So don't worry, just by Okay. joining the regular classes also, you will get effects. Don't worry. Okay? Okay, fine. Thank you, ma'am. Mm. Okay, Grishma ji. Okay. Yes. Okay. Ma'am, is there any recording of the session? Actually, I missed the session. Or you It's can okay, just Rupali ji. name. The recording is happening and it will be published on YouTube in few days. So you can go on Always Live Yoga page and you can collect it from there. Okay. Okay, thank you, ma'am. Okay. Okay, Rupali ji. Yes. One last question and then I will be ending the session. Any other queries? Ma'am, at what time every day will you be available on regular basis if I want to join? Okay, I will be available 6:30 a.m., then 9 a.m., then 4:30 p.m., and then 6:30 p.m. My batches runs 6:30 a.m., 9 a.m., 4:30 p.m., 6:30 p.m. Okay, ma'am. Every day is it, ma'am? I can join like Yes, every day. Yes, yes, yes. You can this. join Ma'am, any time these whichever is asanas comfortable. we have to perform empty stomach.
Yes, always remember all the asanas we are performing empty stomach only. Or if you are having a meal, you make sure you are giving a gap of at least 3.5 to 4 hours before attempting any asanas. Okay? Even ma'am for the butterfly pose, like butterfly Yes, poses. only one asana we can do after having our meals is this Vajrasan. Rest all the asanas Vajrasan. performed empty stomach only. Okay? Okay, fine. Thank you, ma'am. Okay, Thank okay, everyone. I'll be taking a leave now. It was Sorry, great sorry, talking. Ma'am, I sorry, will ma'am. Just one you. question. Yes, मैम yes. ये इसमें वेट फ्लक्चुएट भी होता है? बिल्कुल होता है क्योंकि हॉर्मोन्स बैलेंस डिसबैलेंस हो रहे हैं और हमारा जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है जो कि बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, रेज हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, तो उस वजह से वेट गेन हो सकता है, वेट लॉस भी हो सकता है। यूजुअली चांसेस वेट गेनिंग के होते हैं। तो यस डेफिनेटली। और अगेन क्योंकि इस टाइम पे हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं तो हमारा कोर्टिसोल लेवल भी बॉडी में रेज रहता है, जिस वजह से वेट गेन का इश्यू फिर से आता है। तो यस दैट्स व्हाई प्राणायाम्स एंड आसनास विल वर्क अगर आप वेट गेन का इश्यू भी फेस कर रहे हैं तो। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके ओके एवरीवन, टेक Ma'am, one केयर, गुड question, डे if you can एवरीवन। take it up. यस 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 Thank you, यस यस प्लीज ma'am. प्लीज। Yeah, actually, is there any is there any diet you have to focus on, something you should avoid, something you should take to help it with the perimenopause? See, for diet, I will recommend that you talk to a proper dietitian only. We have a dietitian in Always Live Yoga as well. They will guide you much better on this diet topic. Okay? Sure, thank you. Yes. Yes. Okay. Okay, everyone. Take care. Good day.